So, welcome to today's video. We are going to build a REST API in today's video. We are going to build a REST API. Okay. With the REST API, what we are going to build? We are going to build a API of the course. We are going to build a API of course API. Course API we are going to build. And what is there in the course API means we'll be building the URLs to add a course, and let us say second one is to update it, to read all courses, read the courses. Third one we are going to build is to update the existing course, update the existing course. Fourth one is to delete the courses, delete the courses. So we are going to build just these four functionalities. Like you can add a course, you can read the content of the course, you can update the course, or you can delete the course. So for that we are going to use an Express.js, and MongoDB is our database. What are the technologies we are going to use? We are going to use Express.js, and which database we are going to use? We are going to use as MongoDB as our database. If I just want to show you MongoDB. Okay, MongoDB will be our database. So let us start building the API. So what I'll do, I will just come to the desktop. I will go to the, let us say, I'll come to the desktop, and here in the desktop, I'll right click, I'll make a new folder. New folder. The new folder, let us say, I want to make course API. The folder name is course API. I will right click this. I will just open this and open with code. I will open this with the help of code. So in this course API, I will just create few files. Okay, I'll create few files, and I will create a file called app.js. First file, I will create a app.js. Next thing, before starting the Express project, I need to initialize the npm repository. So what I'll do, I'll come here. I will just make it initialize npm init. I can write and I can hit enter. It will ask me a few questions. So आपसे थोड़े क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कोर्स एपीआई नाम रखना है इसका, ओके, वर्जन 1.0 है, ये भी ओके, डिस्क्रिप्शन कुछ चाहिए नहीं चाहिए, app.js एंट्री पॉइंट है, ओके, ये भी चलेगा, टेस्ट कमांड कुछ नहीं रखना, गिट रिपोजिटरी भी नहीं रखना, कीवर्ड्स नॉट रिक्वायर्ड, ऑथर यू कैन जस्ट राइट योरसेल्फ एज ए कोडिंग ज्ञान टेक, this is the author, enter, license you want to keep, no, then this is the final thing you want to enter. So it has asked me, okay, you have created a course API package. Now to make a server, I need to install few packages. The few packages are npm I express, because I need to use Express.js. So मैंने Express को इंस्टॉल कर लिया यहाँ पर. इसके बाद इसको थोड़ा टाइम देते हैं Express इंस्टॉल होने के लिए. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने नोड मॉड्यूल्स, पैकेज लॉग, जोसन, इन सबको बना दिया. नेक्स्ट पैकेज मुझे चाहिए, इसके लिए npm I mongoose, क्योंकि मुझे Mongo डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो mongoose पैकेज डेटाबेस से कनेक्टिविटी के लिए चाहिए. ठीक है, तो अभी हम तीसरा पैकेज इंस्टॉल करेंगे, लेट अस से नोडमोन, क्योंकि हमें अपना सर्वर रीस्टार्ट भी करना है. सो वेट कर लेते हैं थोड़ा. mongoose इंस्टॉल हो गया, तो mongoose इज इंस्टॉलिंग. ओके, mongoose भी इंस्टॉल हो गया, 28 पैकेजेस और ऐड हो गए मेरे इसमें. नेक्स्ट, आई वांट टू इंस्टॉल अदर पैकेज कॉल्ड एज npm I nodemon, ताकि मेरा सर्वर बार बार मुझे रीस्टार्ट ना करना पड़े. नोडमोन इंस्टॉल कर दिया. ये भी बहुत छोटा सा पैकेज है, इट विल टेक जस्ट हार्डली फ्यू सेकंड्स एंड इट इज इंस्टॉल्ड. सो इसके बाद एक और पैकेज मुझे इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है npm I body parser. ओके, ये पैकेज मुझे चाहिए ताकि मैं रिक्वेस्ट में जो बॉडी है उनको पास कर सकूं और मतलब रीड कर सकूं, उसके लिए पैकेज जरूरी है, बॉडी पार्सर. सो कौन सा पैकेज कब यूज करना है, वी विल बी सीइंग दैट. सो दिस इज हाउ आई कैन क्रिएट माय पैकेजेस. सो ये मेरे इंस्टॉल्ड पैकेजेस थे जो मैंने इंस्टॉल किए मेरे एपीआई को बिल्ड करने के लिए. यहाँ पर तुम देख सकते हो, यहाँ पर 4 पैकेजेस है अपने को, एक बॉडी पार्सर, एक्सप्रेस, mongoose और नोडमोन. सो स्टार्ट स्क्रिप्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर एक कॉमा डाल के, ताकि हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाए. यहाँ से स्टार्ट स्क्रिप्ट लिखता हूँ. स्टार्ट स्क्रिप्ट में मैं लिख देता हूँ, जैसे इसको चाहिए नोडमोन app.js. ओके, नोडमोन app.js को इसको स्टार्ट करना है. ठीक है, तो हम अपना भी सर्वर रन करके देख लेते हैं, रनिंग हो रहा है नहीं हो रहा. यहाँ पर मुझे लिखना है सिर्फ npm स्टार्ट, तो ये मेरी app.js फाइल को रन कर देगा.
ओके ओके, वी नीड टू सेव दिस फाइल। हमने ये फाइल को सेव किया, सेव करना भूल गए थे हम। सेव करने के बाद npm start, so it will be opening this file. Okay, nodemon has started successfully, so I can make it down. हम इसे नीचे रख सकते हैं। सो नाउ हमें इसमें सर्वर बनाना है। एक्सप्रेस सर्वर बनाना बहुत इजी है, सिंपल। अपने को लिखना है const express इक्वल टू require express। ओके सिंपल, हमने एक्सप्रेस इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पर हमें ऐप बनानी है, इसकी एक इंस्टेंस बनानी है, जैसे क्रिएटिंग ओके क्रिएटिंग एक्सप्रेस इंस्टेंस, या फिर कुछ भी बोल सकते हैं आप। जैसे मुझे इसकी वो बनानी पड़ेगी, तो यूजुअली दिस द सिंटैक्स ऐप इक्वल टू वी कैन राइट अवर एक्सप्रेस। सो हमने यहाँ पर ये बना लिया। अभी लास्ट में सर्वर को लिसन करना है, तो नीचे जैसे बना देते हैं, लेट अस से लिसनिंग टू पोर्ट। सो हम इसको रन करेंगे, लेट अस से 4545 पे हम इसको रन करने वाले हैं। सो आई कैन जस्ट राइट ऐप डॉट लिसन, ऐप डॉट लिसन भाई पोर्ट नंबर है 4545। आई कैन जस्ट राइट ए कॉल बैक फंक्शन अगेन। कॉल बैक फंक्शन मतलब अगर ये सक्सेसफुली चलती है तो हमें यहाँ से चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए मुझे चाहिए यहाँ पर एक कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ऐप रनिंग ऑन पोर्ट 4545। ओके सो अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर यूआरएल लिख सकते हैं http दिस वन / लोकल होस्ट, कौन से पोर्ट पे चलेगी भाई, 4545 पे चलेगी। ठीक है, ये यूआरएल भी लिख दिया। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, तो आप नीचे देख सकते हैं स्टार्ट हो गया, चेंज हो गया, हमारे पास यूआरएल भी आ गया। हम इसको कंट्रोल+ क्लिक करते हैं, तो इसने मेरे बाय डिफॉल्ट ब्राउजर में लोकल होस्ट को ओपन कर दिया। ठीक है, सो यहाँ पर आप तुम देख सकते हो कि ये मेरा कैन नॉट गेट है, लोकल होस्ट 4545 पे इसने चला दिया आपको। सो ये था बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। सो हम पहले करते हैं कि MongoDB को कनेक्ट कैसे करें। ओके अपने को डेटाबेस कनेक्ट करना है, तो mongoose पैकेज चाहिए जो हमने इंस्टॉल किया था। तो चलो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, मतलब इसमें यूज कर लेते हैं const mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। मुझे mongoose चाहिए, मैंने mongoose ले लिया। अब mongoose में मुझे कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करना है मतलब mongoose को मुझे कनेक्ट करना है, मतलब देयर इज ए पैकेज कॉल्ड, ऑलरेडी फंक्शन है अपने पास mongoose डॉट कनेक्ट। ओके mongoose डॉट कनेक्ट एक फंक्शन है जिसमें अपने को देता है डेटाबेस का वो देना है, क्या पाथ है डेटाबेस, कौन से पाथ पे डेटाबेस है। तो कैसे पता चलेगा अपने को, अपने पास व्हेन वी इंस्टॉल MongoDB वी गेट समथिंग कॉल्ड एज Mongo dcompass। ओके आई डोंट वांट टू सर्च Mongo। जब भी हम MongoDB इंस्टॉल करते हैं तो अपने पास Mongo कंपास आता है, MongoDB कंपास। सो MongoDB कंपास क्या है कि UI है। ओके इट्स ए UI बेस्ड डेटाबेस। यहाँ पर अपने को जितने भी डेटाबेस है वो सब दिखेंगे। मेरे सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस है, ये सब पूरे डेटाबेसेस है। ये है मेरा URL स्ट्रिंग। सो दिस इज हाउ माय डेटाबेस कैन कनेक्ट। इस पाथ पे मुझे कनेक्ट करना है, आई कैन कॉपी दिस और फ्रॉम हियर आई कैन कनेक्ट। तो तुम देख सकते हो मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे डेटाबेसेस है, एनिमल्स एक है, प्रोडक्ट एक है, स्कूल है, सोशल मीडिया है, डिफरेंट डेटाबेस है। सो हम नया डेटाबेस बनाएंगे और उसमें अपने पूरे डेटा को स्टोर करेंगे। सो उसके लिए मैंने स्ट्रिंग यहाँ से कॉपी कर ली, मैं यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग को पेस्ट करता हूँ। ओके ये है MongoDB की पाथ, MongoDB / लोकल होस्ट, ये उसका पोर्ट नंबर। और इसके बाद मुझे कौन सा डेटाबेस पे क्रिएट करना है। सो मैं एक डेटाबेस बनाऊंगा नया जिसका नाम होगा कोर्सेस। ओके कोर्सेस डेटाबेस पे कनेक्ट करेगा। इसके बाद ये कनेक्ट करेगा, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भाई कुछ पैरामीटर्स इसको देने पड़ेंगे। तो पैरामीटर्स यहाँ से हम इसको पैरामीटर्स ऐसे दे देते हैं। तो पैरामीटर्स क्या होंगे, एक है यूज न्यू URL पार्सर। ओके यूज न्यू URL पार्सर, ये URLs को पार्स करने के लिए हमें इसको ट्रू करना है। ओके एक और पैरामीटर हमें इसको देना है कि यूज, 2-3 ये पैरामीटर्स की कॉन्फ़िगरेशन है, हमें इसकी लाइक व्हेन वी ओपन दिस राइट, इसकी कॉन्फ़िगरेशन उसमें मिल जाएंगे हमें। यूनिफाइड टोपोलॉजी। ओके ये भी हमको ट्रू करनी है। सो इसके बाद MongoDB यहाँ पर इसने कनेक्ट किया, उसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि कनेक्ट हुआ नहीं, हमें लिखते हैं .den।
अगर रन हुआ होगा तो हमें ये फंक्शन कॉल करना है जिसमें लिखा होगा console.log सक्सेसफुली कनेक्टेड विद डीबी, सक्सेसफुली कनेक्टेड विद डीबी। अब मैं इस फाइल को सेव करता हूं। ये देख नीचे हमारे पास ऑलरेडी एक एरर है, तो हम इसको सेव करेंगे। तो यहाँ पर इसको मैंने सेव किया। सो वी कैन से इट इज रीस्टार्टेड आवर ऐप एंड इट सेज दैट सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डीबी। अगर तुम यहाँ पर पोर्ट नंबर कुछ अलग दे देते हो, बाय मिस्टेक कुछ गलती करते हो, तो अपने पास एरर आएगा। सेव। तो यहाँ पर देखो हमने सक्सेसफुल नहीं आया। वी कैन जस्ट राइट एन एरर ऑल्सो। अगर यहाँ पर कुछ एरर आता है तो उसको कैच कर लेना है। एरर आया तो हमें कैच करके सिंपल we can just write console.log error. We can write error and we can just print what is the error. If I just write E and I can just write comma and E. Now if I save, you can see it has started. It will now print the error also. Means database यहाँ से connect नहीं हुआ, कुछ error आ रहा है. It is keep trying on connecting to DB, but let us say we make the port exactly same. What is the port? 017, right? If I just save this again file, I saved this file. Now it says that app started and connected with DB. So this is called as MongoDB connection. तो आपने सक्सेसफुली MongoDB से कनेक्ट कर लिया, वो भी Express.js की मदद से. So MongoDB अपने पास कनेक्ट हो गया, तो अपन MongoDB में अभी पूरे ऑपरेशंस कर सकते हैं, जैसे गेट हो गया, फाइंड हो गया, पूरे ऑपरेशंस अभी हम ट्राई करेंगे. सो Mongo's पैकेज चाहिए. Mongo's में कनेक्ट फंक्शन है जो डेटाबेस से कनेक्ट करता है. सो इसके बाद हमें चाहिए समथिंग कॉल्ड एज बॉडी पार्सर. ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन है जो इसके लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा. सो इसके लिए हम इंस्टॉल करते हैं बॉडी पार्सर. वी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, जस्ट वी नीड टू यूज दिस. इक्वल टू वी कैन कॉल रिक्वायर. व्हाट आई नीड टू रिक्वायर? आई नीड टू रिक्वायर बॉडी पार्सर. आई जस्ट राइट बॉडी पार्सर. ओके, बॉडी पार्सर मैंने यहां से बुला लिया. तो बॉडी पार्सर मुझे एक्सप्रेस में यूज करना है. So I want to use, they are known as middlewares. Okay, using middlewares. So मुझे बॉडी पार्सर, बॉडी से मतलब डेटा को रीड करने के लिए मुझे ये सब चाहिए. तो उसके लिए क्या लिखना है मुझे सिर्फ लिखना है app.use. मुझे क्या यूज करना है? I want to use body parser dot URL encoded. Okay, URL encoded. I need to pass one object called as extended equal to false. So this is the configuration I need to give. So second body parser I want to use, I want to transfer the data using JSON. Okay, app.use express.json. Okay, express.json. Why we are using express.json means we will only deal with the JSON object. So we'll be creating our data, we'll be posting our data in the JSON format only, in the form of JSON. So it says that user is not a function. Okay, it is use, not user. If I come here again, save this. So it says that successfully connected with DB. So this is the configuration you need to create the API. So हमने अभी पूरा create कर लिया है. 4545 अपना project चल रहा है. And this is the configuration to connect with the MongoDB. And this is the app configuration. So now we can create the routes. Okay, now we can create the routes for the product and all these things. So let us say हमें courses बनाना है, तो उससे पहले हमें बताना पड़ेगा कि क्या collection है. जैसे अभी which collection, okay, what is the content there in the course में क्या क्या fields है, क्या क्या है, वो सब हमें बताना पड़ेगा. So उसके लिए ये है, this is the configuration about connecting to MongoDB. ओके, ये पूरा MongoDB का कनेक्शन है. नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? कोर्सेज में अपने पास है क्या क्या वो बताना है. सो लेट अस से क्रिएटिंग द स्कीमा. स्कीमा मतलब कलेक्शन, और यू कैन से कलेक्शन बनानी है. सो लेट अस डिफाइन ए कलेक्शन. सो हमें बनाना है, लेट अस से लेट, और एल्स हम एक स्कीमा बना सकते हैं कॉन्स्ट कोर्स. ओके, ये कोर्स मुझे बनाना है. कैसे बनाना है? न्यू mongoose dot create schema. Okay, mongoose dot not schema schema. So मुझे स्कीमा में क्या पास करना है कि मेरा कोर्स कैसा दिखेगा, हाउ शुड माई कोर्स लुक. उसमें क्या क्या होना चाहिए मेरे कोर्स में? नेम होना चाहिए कोर्स का,
वो एक कौन सा टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का। सो नेक्स्ट मेरे कोर्स में क्या होगा, ड्यूरेशन होगा। ड्यूरेशन क्या होगा, नंबर टाइप का होगा। ओके नेक्स्ट मेरे कोर्स में क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा। वो क्या होगा, एक स्ट्रिंग टाइप का होगा, स्ट्रिंग। सो सिमिलरली मेरे कोर्स में एक प्राइस एट्रीब्यूट भी होगा जो भी नंबर टाइप का होगा। यू कैन राइट एक्टिव है नहीं है वो भी एक बुलियन बना सकते हो। लाइक कोर्स अभी फिलहाल मैं बेच रहा हूं नहीं बेच रहा, एक्टिव यू कैन राइट इट्स ए बुलियन। ओके वी कैन राइट बुलियन, BOOLEN। ओके सो ये मेरे कोर्स के एट्रीब्यूट्स है कि मेरे कोर्स का नाम है, उसकी ड्यूरेशन है, उसका डिस्क्रिप्शन है, उसका प्राइस है, उसका एक्टिव है, मतलब कोर्स अभी एक्टिव में है नहीं है। सो इसके हिसाब से मैं मतलब मेरे वेबसाइट में कर सकता हूँ। सो बुलियन वी कैन रिमूव और वी कैन कीप इट। सो दिस इज माय कोर्स डिजाइन। सो मैंने मेरा कोर्स डिफाइन कर लिया। सो ये था कोर्स कैसा दिखना चाहिए। मुझे अब डेटाबेस में कलेक्शन डालना है, तो कैसे डालूंगा मैं, कॉन्स्ट की स्पेलिंग CONST इज करेक्ट और नॉट, लेट अस चेक। इट इज स्टार्टिंग, ओके सक्सेसफुल कनेक्टेड। सो यहाँ पर मुझे एक नया बनाना है, लेट अस से ये कोर्स का स्कीमा है, कोर्स स्कीमा राइट, आई कैन मेक इट एज ए कोर्स स्कीमा, मतलब कोर्स मेरा कैसा दिखता है। इसके बाद मुझे क्या करना है, एक कलेक्शन बनानी है। आई वांट टू मेक ए कलेक्शन इन माय डेटाबेस, मेक ए कलेक्शन टू माय DB। मेरे डेटाबेस में एक कलेक्शन डालना है मुझे, तो कलेक्शन का नाम रखते हैं अपन कोर्स। लेट मी जस्ट मेक ए कलेक्शन कॉन्स्ट कोर्स। ओके मैंने एक कोर्स नाम से कलेक्शन बना रहा हूं, इक्वल टू न्यू mongoose डॉट मॉडल। ओके इसमें मॉडल फंक्शन है जिससे हम वो बना सकते हैं। ये है मेरे डेटाबेस की कलेक्शन का नाम, और उसमें कैसे बनाना है मुझे, आई वांट टू मेक इट एज ए कोर्स स्कीमा, कोर्स स्कीमा टाइप की कलेक्शन बनाना है। सो दिस इज द डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन वी रिक्वायर। मतलब पहले हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया और उसके बाद मैंने ये कोर्स स्कीमा बनाया। मतलब मेरा कोर्स कैसा दिखेगा, कोर्स में क्या क्या एट्रीब्यूट होंगे, नाम होगा, ड्यूरेशन होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, प्राइस होगा, एक्टिव होगा। उसके बाद मैंने कोर्स नाम से एक कलेक्शन बना दिया। ये तो एक रेफरेंस है, ये एक्चुअल कलेक्शन वहां पर जाके बनेगी। ठीक है ये डन है। सो अभी हमने पूरी कॉन्फ़िगरेशन कर ली। सो हमें सब API राउट्स बनाने हैं जिससे कि हम कोर्स बना पाए, उनको अपडेट कर पाए। राउट्स बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं ऐप डॉट, पहले हम क्रिएट करते हैं क्योंकि कोई कोर्स नहीं है ना, तो हम रीड का URL बाद में बनाएंगे। वी कैन राइट क्रिएटिंग ए कोर्स, क्रिएटिंग ए कोर्स, पहले कोर्स बना के देखते हैं। सो कोर्स क्रिएट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ऐप डॉट मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है। ओके कौन से URL पे, इस बार मैं स्लैश URL पे नहीं करने वाला, स्लैश API स्लैश V1 मतलब वर्जन 1 और स्लैश कोर्स, कोर्स स्लैश न्यू। मैं ये वाला URL यूज करने वाला हूं कि कोई भी मेरा स्लैश API स्लैश V1 स्लैश कोर्स स्लैश न्यू पे आके कोई भी रिक्वेस्ट करे तो नया कोर्स बनना चाहिए। तो नए कोर्स के लिए मुझे क्या मिलेगा, रिक्वेस्ट मिलेगी, यहाँ पर रेस्पॉन्स मिलेगा, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स, और मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकता हूँ। सो मुझे नया बनाने के लिए अभी क्या करना है, यहाँ पर कोर्स, यहाँ पर मैंने लिया। यहाँ पर हम अभी करते हैं कि हमें पहले बॉडी से क्या मिल रहा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। ओके सो पहले मैं चेक कर लेता हूँ console डॉट लॉग, आई कैन जस्ट यूज व्हाट इज देयर इन माई रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें क्या मिल रहा है। सो लेट मी जस्ट टेस्ट दिस। ये सक्सेसफुल यहाँ पर कनेक्टेड हो गया। टेस्टिंग के लिए वी नीड टू डाउनलोड समथिंग कॉल्ड एज पोस्टमैन, वी नीड टू डाउनलोड समथिंग कॉल्ड एज डाउनलोड postman to test my APIs. Okay, you can click download postman, you can download for your any Windows, anything you whatever you want, just you need to click this download button. So डाउनलोड होने के बाद हम इसको रन कर सकते हैं। मेरे सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो यहाँ पर मैंने पोस्टमैन को रन कर दिया। सिंपल नेक्स्ट नेक्स्ट 2 बार क्लिक करते ही ये डाउनलोड हो जाएगा एंड इंस्टॉल भी हो जाएगा। सो हम यहाँ पर आते हैं। सो देर इज नो गेट रिक्वेस्ट बिकॉज यहाँ पर इस URL पे कोई है ही नहीं। सो मेरा URL क्या है, अगर मुझे कोई नया कोर्स क्रिएट करना है तो मुझे जाना पड़ेगा स्लैश API स्लैश वर्जन 1 और स्लैश न्यू में। सो यहाँ पर मैं आता हूँ, ये मेरा पोस्टमैन है, इसको ओपन होने देते हैं थोड़ा। ओके ये ओपन हो गया पोस्टमैन।
ओके, आई विल क्लोज दिस अदर थिंग्स। यहाँ पर मैं इसको सभी रिक्वेस्ट को क्लोज कर देता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने इसको कट कर दिया। सो सेव चेंजेस, ठीक है। सो ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं पूरे को, नहीं चाहिए मुझे, डोंट सेव। सो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, नया कलेक्शन बना लेता हूँ एक, और एल्स पहले हम नई रिक्वेस्ट मारेंगे, न्यू, आई वांट टू मेक ए न्यू रिक्वेस्ट। सो व्हाट इज द रिक्वेस्ट आई वांट टू शो, लेट अस से आई वांट टू मेक ए पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, कहां पर मारनी है, http//localhost, और एल्स वी कैन कम हियर टू आवर ब्राउजर, वी कैन कॉपी दिस यूआरएल। हम यहाँ पर इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद सिंपली हमने यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, स्लैश, अगर मैं यहाँ पर पोस्ट मारूंगा तो कुछ नहीं होगा, देयर इज नो रिक्वेस्ट, एरर आएगा 404। सो मुझे ये 404 आ रहा है, मतलब नॉट फाउंड। यहाँ पर तुम देख सकते हो ये एरर कोड है यहाँ पर। ओके, दिस इज द एरर कोड। सो यहाँ पर मुझे मारना है /API पे, /version1 पे, /course/new, और मुझे कुछ डेटा भी भेजना है। तो मैं यहाँ पर बॉडी में जाऊंगा, बॉडी पे क्लिक करके नेक्स्ट रॉ, नेक्स्ट विच डेटा आई वांट टू सेंड, आई वांट टू सेंड द जेसन डेटा, देन आई कैन जस्ट राइट द जेसन ऑब्जेक्ट, व्हाट्स द नेम, things I need to send, name I need to send, let us say C course, comma, okay, name I want to send, next thing what I want, let me just come here to the my schema, क्या क्या भेजना है, ड्यूरेशन भेजना है, डिस्क्रिप्शन भेजना है, प्राइस भेजना है। मैं इसको यहाँ से स्कीमा को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें आके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ओके, नाउ आई नीड टू सेंड ड्यूरेशन, लेट अस से ड्यूरेशन आई एम सेंडिंग। ओके, ड्यूरेशन इज लाइक वी कैन से 45 days, एंड लेट अस गो विद डिस्क्रिप्शन। इसको भी यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन को स्ट्रिंग में बनाया, आई कैन मेक दिस वे। प्राइस ऑल्सो आई विल जस्ट डू द सेम। okay, price also I'm doing the same thing, and next active I'll make it true, मतलब course active होगा। what is the description, you need to pass a string, let us pass a string that C best course, I am writing C best course, and price in numbers, let us say I want to sell it around 900 rupees, simple. At last I don't need a comma. So now this is the post request. At this URL api/v1/course/new, I want to hit a post request. When I hit the post request, you see it is keep sending on request. But when you come to the console, you see our course is printed. Means we are successfully getting this course. हमें कोर्स मिल रहा है। तो हमें अभी नेक्स्ट क्या करना है, इस कोर्स को हमें डेटाबेस में भेजना है। सो आई वांट टू ऐड दिस टू द डेटाबेस। सो ऐड कैसे करना है, सिंपल, वी कम हियर, हम यहाँ पर इसको सेव करते हैं और नेक्स्ट मुझे ऐड करना है ना, तो लेट अस से वी मेक ए कॉन्स्ट कोर्स। हमने एक कोर्स लिया, उसमें क्या किया, जो अपना ओरिजिनल कोर्स था, ओरिजिनल कोर्स अपना ये था ना कोर्स, इस कोर्स में मेरे को ऐड करना है COURSE कोर्स डॉट क्रिएट फंक्शन। ओके, आई वांट टू क्रिएट ए कोर्स। सो मुझे क्या क्रिएट करना है उसमें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी भेज देना है उसमें, REQ डॉट बॉडी। सो जैसे ही ये कोर्स की रिक्वेस्ट बॉडी कंप्लीट होगी तो ये मुझे कुछ रेस्पॉन्स देगा। ओके, रेस्पॉन्स देगा, मुझे इस रेस्पॉन्स के लिए अवेट करना है, क्योंकि ये 1 सेकंड में तो करने वाला नहीं, डेटाबेस पे जाएगा, वहां पर क्रिएट करेगा। तो मुझे यहाँ पर एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग यूज करनी होगी, कि मैं क्या चाहता हूँ कि जब तक ये काम करे मुझे यहाँ पर रुकना है, इस लाइन से आगे नहीं जाना है। तो ये यहाँ से अवेट करके मुझे कोर्स रिटर्न कर देगा। तो मुझे इसके बाद रिटर्न कर देना है रेस्पॉन्स डॉट स्टेटस, आई वांट टू सेंड स्टेटस। क्या स्टेटस भेजना है, 201। status code I will tell you later. 201 means product created. I will just send JSON. यहाँ से मैं JSON भेज दूंगा। क्या भेजूंगा, एक मैसेज भेज देता हूँ सक्सेस करके, यहाँ पर ट्रू भेज देता हूँ कि ये हो गया ट्रू। यहाँ से और क्या भेजता हूँ, मैसेज भेज देता हूँ, जो चाहो तुम भेज सकते हो। यहाँ से मैं मैसेज भेजता हूँ कि योर कोर्स क्रिएटेड सक्सेसफुली, योर कोर्स क्रिएटेड सक्सेस। ओके, यू कैन राइट दिस वे। और हम साथ में इसके साथ एक कोर्स भी भेज देते हैं कि कौन सा कोर्स क्रिएट किया है इसने। ओके, यहाँ पे इसमें हम इसको कोर्स भी भेज देते हैं। ओके, कोर्स मतलब ऊपर वाला कोर्स भेज देता हूँ मैं। ठीक है, हमने ये टेस्ट कर लिया। सो हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि काम हो रहा है नहीं हो रहा। मैंने इसको सेव किया, अपना नोटबुक फिर से स्टार्ट हो गया। वी कैन गो टू आवर पोस्टमैन, और इसके बाद सेम रिक्वेस्ट 4545 पे
कोर्सेस में जाके न्यू पे मैंने यहाँ पर पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड की. I just ended the post request. See, now you are getting the things. Success true, your course is added, we get the course object. So now if I want to come here, our database also, we can see localhost connected, we can go to databases. I got a new database. Let us say, what is the database? I need to just refresh this. Refresh. You can just have a look. We got a courses database, and inside this we got a courses collection, and here we are getting this C course. So this is how the create API works. So हमने create कर लिया. Now next thing is I want to read the courses. I want to read the courses. Means I will create one more API endpoint to read all the courses. So this is the create course. So I'll just make a app dot get. Just a second. So let us make the reading the course. So how we can read the courses? We can go to /API/v1 and /courses. Now I will use the API called courses. Then here, what I'll write, I will just make another function, async function. You can use the request and response. I can just make this way. And here in this, what I want to get all the courses. So to get all the courses, I just need to use a find method to get all the courses from database. It's very easy. Const courses, I can declare one thing, and I can just say await. I need to get the course, big course dot find. Okay, if I just write this, I can get the all courses. Then after that, I just can send you the courses back. Response dot status. I want to send the status back. 200 means OK request. Okay, 200 means OK request dot JSON. I want to send. Okay, dot JSON. What I want to send? Status 200. Message. Here are your courses. You can just say you found courses. Okay, your courses are here. Courses are here. You can write this way, and comma, you can just send the all courses back. You can just set courses, and I can just send the courses to the back. Okay, courses back, and I can just save this. Okay, it is starting back. It is successfully connected with DB. Now I will come to the Nodeman. In Nodeman, I will just make a new request. With this new request, I will open the same things. Let us say I will copy the URL. I will come here. I will paste the URL. Now the endpoint is not new. It is the /API/v1/courses, and it is a get request. If I send this request, you can see I got our courses. There is only one course. I got the your courses are here. So let us add one more course. I will just write now Java course. We'll just write Java. The course duration will be 90 days. And let us say Java best course and all these things. Java best course and all these things. So if I just hit send, it will give me Java course inserted. So here if I had the get request, it should get me 2 courses now. So you see, I got the 2 courses. One is C and one is Java. So this is known as getting request. This is get request. This is the post request. Now let us make the delete request and update request. First we'll make the update request. Okay, first we'll make the update request. So to update request, the method used is app.put. Okay, I will use the app.put method, and I will just use the point as /API/v1 means it's a version 1 / product. Sorry, we updating courses, right? Courses /ID. Okay, /ID. Why I'm sending this ID means I don't want to update all courses. Which course I want to update? I will just get the ID of this course. Now from here, I will just write async, and I need to write 2 methods, request and response, and I will just write a simple course this way and close this. And here I can just find the course. First I need to find the course, right, with the ID. First I will find the course with the ID. Let us say let course. Let us find out the course. Let course equal to, let us find out, await. I will just write course dot find by ID. Find by ID. Where is the ID I will getting? I will getting the ID in the URL. Request dot params dot ID.
means whenever you get ID, it will get the ID and it will find the course. Okay. Then after getting the course, what I need to update the course. Let us say if the course is not found, if not equal to course, we'll write one error condition also. अगर कोर्स नहीं मिला हमें, किसी ने गलत आईडी दी और कोर्स एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम उसको सीधा रिटर्न कर देंगे यहाँ से, रिटर्न response dot status. I can just write a status called 404 and I can just send JSON. इस JSON में क्या सेंड करना है? I can just send return spelling return. ओके, रिटर्न किया response dot status. यहाँ पर मैंने status कर दिया, यहाँ पर status I just write status 404 and I can just write a simple message, course with ID not found. ओके, ये है कोर्स नहीं मिला. तो अगर हमें कोर्स मिलता है तो what we need to do, we need to modify the course. Okay, let me just write course. I will write the small course, this one, and then I will write something called as await course. If the course is found successfully, then I will use a function called find by ID. It should find by ID and update the course. Okay, means if first it will find by ID and then it will update the course. What should it find? It should find request dot params. Okay, request dot params dot ID. Then finally it will give me request. What I need to update? Request dot body you need to update. Okay, request dot body it should update. Then after this we need to pass some few parameters. Okay, why we are passing these parameters? I will tell you, because like I don't want to pass full things again back. So if it is new, I just want to make it true. Other thing is, let us say use find and modify false. Next thing is run validator. Run validator, it is true. Okay, हमने ये कर दिया. इसके बाद let us say what I want. If it is found and successfully updated, let us say what it will do. It will just return me response dot status. The request is okay, right? 200, and then I can return the JSON file again, JSON, and here in this JSON I can just find success. Okay, status. I can just say 200 and your course updated. I can just find course updated, or I can just say the course, which course updated. You can just write the course. You can have this. Okay, now let us try this. I will save this file. It will successful connecting. Okay, successful connecting with the DB. I can see if I come to my MongoDB, if I just refresh this, I will get the two courses. Okay, if I just click refresh, you see I got the two courses, C and Java. So what I'll do now, I will come here, I will get the which request to which URL I'm passing. I am passing /API/courses/ID. Okay, this is the thing. I will get this request, copy, I'll add a new request, I'll just paste this, and if it is a get request, it will get me the courses. Okay, but let it make it a put request. And what I want to send in the body, let us say raw. In the text I can send the JSON. So in JSON, what I want to send a similar kind of course, and I will just get the course this way. And let us say best course, it is 90, around 100. Java updated, let us say Java course updated, and I need to get the ID of the Java course. Okay, ID of the Java course, and I need to pass the ID. So now it will update the Java course. If I send, okay, we got an error. What's the error? It has response, it has failed something. Res.status. Res is not defined. What we find there? Okay, we found RESP, right? Now it is correct. Okay, it's our mistake. We did some res and response. Now if I send, I'll get the Java course updated. Now when you go to hit get request, so we can just update our courses. So let us see how to update your courses. Means we can go to put request and Java course updated,
and you need to pass the ID. Okay, you need to pass the ID. Let us say I pass a wrong ID. This F45 is not existing. If I just send, it says that sending request, it got some error. Let me just check out what is the error. We can come to our code and we can say it is value type string and it has been modified something. Okay, like it crashed. Wait a sec. If not course, I want to send a course ID not found. Let me just make this one, save this. My app started connecting to database successfully. Now what we'll do, we'll just cut this ID and we'll get all the courses. What are the courses available to us? If I just hit a get request, I get 2 courses. So let us say first courses, we get this ID, we'll copy this ID and we'll come here, and in the put request after /course, I will just put this one, this ID, and this is C course, right? I will just go write something called as C++ course now. Course now. And that's the same thing, 900 rupees or 1000 rupees I can update on my thing. And if I hit send, it should give me C courses now, and it has given the same ID. And if we go back in the get request, you see now it is C, right? And duration and all these things are there. If I hit send, it will get the new courses. Now it is C++ course with the same ID. So let us say I want to put another thing with this ID. I want to put to this ID. It should logically give me error. Okay, it has not found something. Error constants. What is the error means? So let us test this. Value type error. The reason behind is argument passed is must be string of 12 bytes or a string of hexa characters or an integer. Okay. So it is copying on the length. If not course, then I should get the course ID not found. Let us test back. What was the control Z? And instead of 3, I write 4. Now let us test. Same. It is not getting the things back. So before going to this, solving this error, we can create a delete request. So I want to delete the courses. So let us cut this. To write the delete course, I just need to have put method, get method, post method, and let us say app.delete method. App.delete. Okay, what you want to delete? The URL can be same: /API /v1 /courses / I want to accept an ID, means which course you want to delete. Okay, which course you want to delete. Then here I need to use the function known as async to perform the asynchronous task. Async, and then I can use the request comma response, and I can just use this way. Here first I need to find the course, right? Same as put request, I will get a find the course with the parameter ID. I'll come here and I will just find the course with the parameter ID. So now I got the course. Now I can just remove the course. I will just write await course dot remove. Okay, that's all. Means it will remove the course from the database. Now I can say response dot status is 200, means request is okay. Then I can just write dot JSON. What I want to send, I can send status 200, means it is success, and message I can say your course deleted successfully. Your course deleted successfully. I can just write this way: your course is deleted successfully. Now what I need to do, I can just test this thing. I can save this file. I can check if it is connecting to DB or not. Okay, the server has been stopped. We'll restart our server. Right click. Okay. Instead of this, I'll just run the server back. npm start. So my server will be again restarting. Okay.
the server should start and successful connected DB 454. I got this. Now I want to check the delete request. So let us say first I will get all the records, all the courses. So I am having two courses. One is C, C++. Let us create one more course. Okay. Now on the new, let us say dummy course. I'll create one course, dummy course. And if I hit, let us say it is of 7,000 rupees, kind of 70,000 rupees, and dummy course something. I'm just creating a one more course. Okay. If I click send, it will come and it will say that success, your course is created true. Now if I go to the get request and if I run this get request, hit this get request, it will print me 3 courses available to me. Okay. Array of courses I am getting. There are 3 courses in here. C course, C++ course, and dummy course. Let us take this dummy course ID. Okay. Let us take this dummy course ID, copy this, and we'll hit a request. Which request? We want to hit a delete request. And what is the URL? This is the same URL. I can just copy the URL, copying this and pasting this URL, and the ID of this course I can get from here. I just need to copy this, Control C for copy, then I can just paste this ID here. So if I just hit a delete request, I can send this. It should give me 200, your course successfully deleted. Now again, if I hit the get request, it is successfully deleting my course. So now this way you can delete the course, you can update the course, and you can get the courses. So here I got my course deleted. Now again, if I hit the same thing, right, it will give me error. It will give me error. So what is the error means? It has not found such course with this. So for avoid this error, we can write this way. Okay, we can write this way. If course not found, if not course, if course is not there, I can just return it back. Return response.status. What should be the status if course not found? 404. You can write 404 and .json. I can use this way, and I can just try writing status 404 comma message. What message you want to give? Course does not exist. Course doesn't exist. Something. Okay. Now if I save this, it is crashed because it is not able to read this property. Save this file. It will. Okay. I have Control C, stopping the server, again starting the server. Okay, it is watching these things. Let us say it is successfully connected with DB. Now, if I hit a request of delete, okay, it says that course doesn't exist. Means if you pass the correct ID only, it will allow, or else it will say that course does not exist. Similarly, the same block I can keep up. I think there we have done some mistake maybe. I'll copy this. Instead of an update, I will just use the same thing. Okay. We'll just paste the thing. Instead, course doesn't exist means no ID found. Course here also course doesn't exist will be okay. So we'll check this. We'll just update the things here. Let us say we got on the put request. Now in this put request, I will just change this ID to, instead of 5054 to 5053, and let us try to send this. It says that course updated. Okay, I think there should be an ID with this. Now let me just hit this. It says that course does not exist. Now we are handling error also. Now we have created successfully our 4 request. Now I can create my course. Let us say dummy course created. I can get the courses. How many courses are there? Now there are 2 courses. When I hit, one more course should also come. Dummy course. Now let us say I want to update this dummy course. Simple. Copying this. I come here. I'll just change this ID to the dummy course ID. Okay. This is my dummy course ID. And what I want to update, instead of this dummy course, I want to make it as AI course. Okay. AI course now. And we can say best AI course, and a description I can write best AI course by best teacher, something, anything I can write. If the price is true, I can just use this way. And other thing is I can update this. Now if I hit the request, it says that AI course updated. This ID has been updated. Now if I go to get back to the get request, see, this is the ID, dummy course, it is there. But when I send the back request again, now it is AI course.
So simply now I don't want to have this dummy course again. I can go to the delete request and I can copy this ID from here. I'll copy this, and if I come here and if I just change the ID so that I want to delete, there is nothing else I want to pass, just in the same URL I will just send this send. So it says that your course has been deleted successfully. Now if you again hit the get request, you will not find the dummy course. Now 2 courses only. So simply if you again try to hit the same URL with the delete request, you say that course does not find, means we do not have this kind of courses. So this is about the API building. Now we can create one collection and store all these things there. We can create a collection. Let us say new collection. I want to have new collection. Let us say I want to write the name. Then I want to add request. Okay, this is the new collection, right? Wait a sec. Why I'm writing collection means I can just get this request. I can just save as. I can save this to the new collection, get request, or instead of this new, I can just say add a course. Okay, add a course. I can just use this way, save. So now it is add a course request. Now let me just save it as again back, save. It should add to this folder, new one. Okay, this is called as get all courses, get all courses, save. And I can just make this as save as. It is called as update course, update course, not courses, it's course. Okay, which course you want to update, you can happily update. And finally it is called as delete course. I can just write this way, and it is delete course, save. I don't want to have a new request now. I can just delete this. Actually I don't need this. I can delete this logically. I can delete this new request. I don't want. Now this new collection, I can rename it, rename course API. So this is our course API. Now if I, even though if I close all these requests, whenever I come back, I will just get this courses API and I can add a course. So it will add this request URL, it will add some content on the body, and I can add the course. So dummy course will be added again. If you want to check your database also, in database there are 2 courses. If you refresh your database, you will find one more dummy course here. So it is exactly storing the things in the database. Now let us say dummy course 23 and something other thing we added. We click this. Now we have 4 courses. If we want to check, refresh it, we are able to refresh this database and we get 4 courses, dummy 34, dummy course. Similarly, if you want to get all the courses, click on this request. You can hit the send request and you'll get the 4 courses. Now you can see we got 4 courses. Then update the request and delete request. Similarly, you can perform. Let us say I want to perform delete request. Which request ID? Let me just create this ID. It will say that this ID does not exist. So which ID I want to delete? Let us say I want to delete first one, C++ course. Now I'll come here, copying this ID, and in the delete course, I'll just paste this ID. And if I just hit send request, it says that your course deleted successfully. Now if you check in our database also, there will be only 3 courses now. 2 dummy courses, 1 is simple course. We get request, now 4 courses. If we send, 3 courses. So this is about the API tutorial. We have created our course API, which can have 4 functionalities. It can add course, delete course, update course, and get all the courses. So this is about the API building with the help of MongoDB, Express.js. Okay,